जेनजी लेजी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनको मोटिवेट करने के पुराने तरीके काम नहीं करते। ज़्यादा सैलरी नॉट इनफ, बेटर टाइटल डजंट मैटर मच। तो फिर जेनजी को एक्चुअली काम करने के लिए मोटिवेट क्या करता है? और अगर एम्प्लॉयर्स ये समझ जाएं तो शायद उनको मोटिवेट करना इतना डिफिकल्ट है नहीं। As many of you know, I am a happiness coach in training. So, yesterday, while studying positive psychology, I came across something very interesting, जिसको पढ़ के मुझे लगा कि ये जेंजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उन एम्प्लॉयर्स की भी जिनके पास जेंजी टीम है। So, actually, आजकल जेंजी get a lot of flack for being lazy, unsuitable for work. हर जगह से यही सुनने में आता है कि इनसे काम कैसे करवाएं। यही प्रॉब्लम रहती है मोस्टली एम्प्लॉयर्स की। व्हाट जेन ज़ी इज लुकिंग फॉर इज मीनिंगफुल वर्क एंड वर्क लाइफ बैलेंस। They have strict boundaries. They prioritize logging off sharply at 5 p.m. and view work as a transaction rather than the center of their identity. And which is good, I say. There is something called an effort recession that Gen Z has brought about. Basically, it means कि उनका ये कहना है कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, हसल नहीं करेंगे। जो हमारा KRA है या जितने पैसे मिल रहे हैं, उतने उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एक्स्ट्रा स्ट्रेस हमको नहीं चाहिए। वी लव आवर मेंटल हेल्थ, विच इज़ ग्रेट। सालों से कॉर्पोरेट कल्चर या स्टार्टअप कल्चर हैज ग्लोरिफाइड हसल, स्ट्रेचिंग बियॉन्ड आवर लिमिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जेन ज़ी नाउ सेज बस इतने में इतना ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दैट दे आर नॉट हार्ड वर्किंग और दे आर नॉट एम्बिशियस। ऑफ कोर्स दे वांट टू अचीव मोर, अर्न मोर, वर्क हार्ड, बट there is a strong desire also for rapid career growth and better well-being in the Gen Z, which is also why many of them switch roles quickly. And this is where leaders struggle to understand what actually drives them. उनके सामने बड़ा सवाल ये उठता है कि जेनजी को मोटिवेट कैसे करें काम करने के लिए। ज़्यादा पैसे दे दो बट ओवरवर्क कर लो, दे डोंट एग्री टू इट। डेजिग्नेशन दे दो, इट डजंट मैटर टू देम मच। सो सारी पुरानी टेक्निक्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की जेनजी के सामने फेल हो रहे हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? जेनजी places an exceptionally high priority on finding purpose and meaning in their work, says a Harvard study. और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें ये सामने आया है कि जेनजी को मीनिंगफुल वर्क करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल वेलबींग। According to Deloitte Gen Z and Millennials survey, 51% of Gen Zs whose personal values align with their company's mission report feeling happy at work. So Gen Z का formula actually बहुत simple है: money, meaning, and well-being. Gen Z thrives when managers identify what they are naturally good at, whether it is tech savviness, maybe it is rapid information synthesis or collaborative problem solving, and they build their roles around those skills. Gen Z love it if leaders do that. Doing work that allows them to use their character strengths regularly leads to increased job satisfaction and life fulfillment. This is meaningful work for them, the kind of work that aligns with their values and strength. जैसे कि अगर किसी की स्ट्रेंथ क्रिएटिविटी है तो उसको उस टाइप का प्रोफाइल दिया जाए। कोई बहुत सोशली इंटेलिजेंट है तो उसको नेटवर्किंग या बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोफाइल्स दिए जाएं। समवन हैज़ अ लव फॉर लर्निंग तो उसको रिसर्च रिलेटेड काम दिए जाएं। If kindness is someone's basic nature, then engage them in team building and mentoring projects. This is called job crafting, which works very well with Gen Zs especially. अब managers and employers कहेंगे, how is that to be done? कंपनी में तो जो काम है वो ही देंगे ना। Correct. Understandable. आपको बस उसी काम को अलग तरीके से प्रेजेंट करना है एंड थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है विद योर एम्प्लॉयज टू डेवलप देयर प्रोफाइल्स एज पर देयर स्ट्रेंथ्स। सो हियर आर द 3 थिंग्स यू कैन डू। Number 1, give them the why behind their work. Instead of just assigning a project,
Help them see how that work aligns with their personal growth, strengths, skills, and values. Gen Z needs to find micro meaning and purpose in their daily jobs. उनका specific task किसी client को कैसे impact कर रहा है, टीम को कैसे हेल्प कर रहा है, उनकी अपनी स्किल्स को कैसे और इन्हांस कर रहा है, उनको आपको ये सब कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, ये सब क्लियरली लेआउट करके समझाना पड़ेगा. Number 2, conduct stay interviews. Ask them which task this week made them feel very connected, energized them, and which ones drained them. इससे आप और अच्छे से समझ सकोगे कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनके वर्कलोड को उनकी स्ट्रेंथ्स के साथ कैसे अलाइन किया जा सकता है. Number 3, connect the dots and provide well-being incentives. Clearly show them how their unique strengths and values contributed to a successful outcome for the team or the client. Also, add a well-being package to their CTC. मतलब उनकी physical health cover के साथ साथ cover their emotional and mental health expenses also. You can also add an option of well-being leaves in a year or maybe a paid holiday, because Gen Z wants both a clear organizational purpose and strict work-life boundaries. Their why has to be very clear. Why am I working in this organization? Why does this work matter? And does the way this organization works aligns with what matters to me? They want employers whose operational values match their personal values, whether it's environmental sustainability, inclusivity, or mental health support. So maybe Gen Z को motivate करने का solution incentives देना नहीं है. Maybe it is helping them understand why their work matters and where they fit into it. If you are an employer or manager with Gen Zs in your team, share this with another manager who needs to hear this. And if you're a Gen Z, tell me in comments, money, meaning, or well-being, which one matters most to you? For more conversations where we untangle work, happiness, relationships, and life, subscribe to Untangle Life with Anchal. Until next time, keep learning, keep healing, keep growing, and keep discovering with me, Anchal. I'll see you in the next video.